Hi everyone, how are you all doing? So, I have created a short explaining why I have been keeping from making videos. While that's true that rain makes me a little emotional, sad, slow, it is also true that I feel it is a moral responsibility sometimes to do something that leaves an impact or has the potential to leave an impact on the lives of others. And here, I mean, some of my online students who may not even write their feedback in the comment box or give me a like, but still, who are emotional enough and honest enough to write an email to me and explain that they are going through some situation in their lives and they're not able to attend classes, which is face-to-face mode. So they would want me to make some videos to make them feel supported. And I kind of have goosebumps running through my body when I hear that kind of respect. Okay, it also happens sometimes I feel being tricked. You know, some people who watch my videos end up being on my Telegram or on my Instagram. I have an Instagram, MERA DESI swag facilitator by this name for this series. And I have kept an Instagram profile alive or there so that people can connect with me, those who feel that I might be able to help them in any other way, especially for CSAT exam. So some people reach out to me and start asking me for more time to chat with them. See, I have one life, just like you. I have 24 hours. In those 24 hours, I have my own emotions to deal with. I have my own bills to pay. So I would request you to focus and help me make academic videos that focus on this examination and preparation of this examination strictly. I may not be able to give too much time for any other kind of conversations. In the interest of our time, let's keep our focus here. And I accept your compliment, but please forgive me if I'm not able to reply to your chats that are slightly informal in their tone. So today I came across a meme which had a picture of a sea and fish in it. And it said, it's only the dead fish that goes with the flow. Meaning, fish that's alive or people who are alive and lively, they understand no matter what their circumstances are, regardless of their situations, they have to continue believing in themselves and taking those small measures that are important in the direction of their goal. So today I'm going to discuss a 2011 passage. And 2011 was the first time when one optional subject was taken out and CSAT was introduced. And 2011 was also a very competitive year. CSAT was not qualifying. It was difficult for most people, uh, at least for people who did not understand English that well, or at least for people who came from humanities background, from Hindi medium or other regional medium or modes of study. सो उनके लिए टफ था क्योंकि पहली बार इंग्लिश पैसेजेस आए थे, ट्रांसलेशन पैसेजेस आना शुरू हो गए बाद में। मेरे ख्याल से उस 2011 में तो नहीं थे जहाँ तक मुझे याद है, और कुछ डिफिकल्ट पैसेजेस थे। तो आज हम एक पैसेज की बात कर रहे हैं जिसमें वही डेड फिश की कहानी जो है ना, कि जो खाली मरी हुई मछली होती है वो गो विद द फ्लो करती है, और जो जिंदा दिल मछली होती है जो अपने इरादों में, या मतलब हम लोग जो होते हैं जो जिंदा दिल होते हैं अपने इरादों में विश्वास करते हैं, वो अपने गोल्स में विश्वास रखते हैं और समझते हैं कि फेलियर्स और सेटबैक्स और बारिश और सर्दी
होती रहती हैं, मगर हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़े स्मॉल स्टेप्स उठाते रहना चाहिए. सो आज हम शुरुआत से इस सीरीज की शुरुआत करेंगे. आप बताइएगा कि कितनी यूजफुल है. प्लीज सजेस्ट हाउ यूजफुल इट इज, एंड इफ यू लाइक, प्लीज give me a like so that I feel motivated. There are days I don't feel motivated and I need my learners to motivate me. किसी ने कहा है, it is not the teacher who teaches, it's the learner who inspires the teacher to teach, or the facilitator to facilitate what's already inside that learner to bring it out to the surface, to make the optimum use of it. So please inspire me. And here I'm sharing a passage with you, which is part of 2020, 2011. Uh-huh. So you'll see now on your screen this 2011 passage. And here it is for you. It is time for you to read this passage on your own and answer a few questions. Now, I'm not going to really stop here and allow you to read, because it's not a face-to-face class where you practice it with me and I see what pencil marks you've made and what are you marking and how you're doing it, how fast you're reading it. So videos may not allow me that. That is why I believe face-to-face is required for those people who need more practice. However, those who don't have time or circumstances don't allow them for some reason or the other or another, they might do this practice with me over the video. They can pause the video, read it at their own pace, and come back to the main discussion. So it is your moment to pause this video, read this, and then move to questions. Pause the video and move to questions as they appear. How many questions are there? 1, 2, and 3. 3 questions. See how fast can you read this passage? Okay, pause the video and read it again. I'm assuming you've paused the video, read the passage. I'll put this passage in the description box if that helps you. If by going through the description box, pausing the video helps you read that passage in one go without having to pause the video for too long, let me know. I'll do that. Okay, suppose you have paused this video and read this passage. Let me read it with you once out loud. A moral act must be. What are we talking about? What's the noun phrase? A moral act. Must be. And what kind of verb has been used? Must. It's a strong word. Should gives suggestion. Suggestion is still polite, but must is a strong recommendation. So register that thought in your mind, that word in your mind. Must be our own. Next important word is own act. Semicolon. Semicolon, I'm going to talk about it a little more without breaking the chain of the argument. Must spring, another must, strong recommendation from our own will. So what is a moral act? Must be our own act, must spring from our own will. हमें खुद से सोचना है, वो मछली बनना है जो सोचे कि हमें dutiful रहना है. If we act mechanically, alternative to not acting on our own or not using our own will, अगर हम खाली mechanically कि भाई उस तरफ हवा का बहाव जा रहा है, बारिश आ रही है तो आज पढ़ने का मन नहीं है, there is no moral content in our act. आप सब civil services की तैयारी कर रहे हैं, you can connect these dots on your own. Once you start reading a lot of things, this connection becomes an automatic process, subconscious process. It happens fast and on your own without a facilitator having to guide you through it. But since I'm a facilitator, it is my responsibility to show you how it's done, how subconsciously it is done. So I may be going a little slow with you, especially for my YouTube audience. Such action would be moral. Which is that action? Such action में यहाँ पे कौन सा आया? Immediately before this line.
if we act mechanically, this action. So आपको सोचना होता है सच ये किसको point out कर रहा है, the किसको point out कर रहा है. Demonstrative pronoun का जब use किया जाता है उससे पिछली line में जो action would be moral if we think it's proper to act like a machine and do so. समझ गया बात? For in doing so we use our discrimination. अब आपके पास एक और word आता है discrimination से related. Can you think of that word in this moment? What is that word? Bureaucrats को अपना क्या use करना होता है कहीं कहीं? हाँ, डिस्क्रेशन ऐसे आता है वर्ड आपके दिमाग में. नहीं आता है तो आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना है. जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, तो उस पे ध्यान दीजिए. पैसेज में डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ है. We should bear in mind the distinction between acting mechanically and acting. For in doing so, we use our discrimination. Such action would be moral if we think it proper to act like a machine. तो ये तो moral नहीं है ना. ये moral तभी होता है अगर machine जैसा काम करना होता है. And do so for, क्योंकि ऐसा करने में we use our discrimination. क्योंकि कैसा करने में. अब ये थोड़ा सा confusing है. The style of writing is a little confusing. Why? Is it referring to the moral act or is it referring to mechanical act? यहाँ पे अब यहाँ पे discrimination की बात आई है तो थोड़ा थोड़ा हमें खुद से जोड़ना होता है because passages are extracted from bigger articles sometimes. So they might lose a little bit of coherence or connectivity. घबराना नहीं है. We have to continue reading and we'll be able to get the point. We should bear in mind क्या. देखिए यहाँ पे must का use, यहाँ पे must का use दोबारा से, and then should, suggestion. क्या? The distinction, is this word distinction the same as the word discrimination? To certain extent it can be seen as the same as. तो word group जो एक similar word ग्रुप्स है आपके पास, उसे एक आप वर्ड फैमिली कह सकते हैं, वो भी इंडिकेट करती है व्हाट विल बी द मैसेज और क्रक्स बिटवीन एक्टिंग मैकेनिकली एंड एक्टिंग इंटेंशनली. इसका डिस्टिंक्शन आना चाहिए. इट मे बी मॉरल, मे बी, कैसा वर्ड है, मे बी, राइट. सो मे का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अब इसी तरह जब आप वर्ड्स रजिस्टर करने लग जाएंगे अपने दिमाग में, तो आपके दिमाग में कुछ इस तरह का मैप बन जाएगा. इन द इंटरेस्ट ऑफ द टाइम आई एम फॉरवर्डिंग द वीडियो, जहां आपको डिफरेंस पता चल जाएगा मस्ट का, शुड का और मे का. मे का मतलब है नॉट नेसेसरली बट कैन बी looked at, can be seen as. It may be moral of a king to pardon a culprit, but the messenger carrying out the order pays only. Pay attention to such words, only, always. So it is definite that the messenger carrying out the order of pardon plays only a mechanical part in the king's moral act, which is a maybe moral act. But lekin if the messenger were, now ye conditional hai, hypothetical use of the verb were. If you want me to talk more about this, which I do in my face-to-face classes, how grammar is used to understand reading passages, let me know about this. I'll be happy to help you with more support. If the messenger were to carry out the king's order, considering it to be his duty, his action would be hypothetically a moral one. अगर वो सोचता है कि नहीं ये मेरी moral responsibility है, तो एक perspective हो सकता है कि वो उस वक्त morally act कर रहा है क्योंकि उसको responsibility का आभास है. How can a man understand? I love questions in passages because they are a clear indicator of rhetorics. यानी strong emphasis कहाँ पे आने वाला है. How can a man understand morality who doesn't use his own intelligence and power of thought, but lets himself be swept along like a log of wood by a current? कि मतलब लकड़ी का टुकड़ा है और नदी में बहे जा रहा है, dead fish की तरह. Sometimes, कभी-कभी, तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि आप समझ रहे हैं, मैंने बोल्ड में इसे हाईलाइट कर दिया. यहाँ पर सवाल में ही जवाब आपके पास आ गया, क्रक्स क्या है. और उसके बाद लास्ट लाइन को भुलाएं नहीं. लास्ट लाइन में देखिए समटाइम्स, मैंने कहा ना ओनली, ऑलवेज, ये भी इंडिकेटर होते हैं क्या टोन है, क्या मैसेज है. सो समटाइम्स अ मैन डिफाइज कन्वेंशन एंड एक्ट्स ऑन हिज ओन विद अ व्यू टू एब्सोल्यूट गुड. कभी कभी एक व्यक्ति कन्वेंशन को परे रखते हुए, प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए, या फिर जो भी रीति रिवाज या चलते आए हैं परंपराएं, उनको इग्नोर करते हुए अपने एक्ट्स ऑन हिज ओन, अपने खुद से डिस्क्रेशन पर, अपनी खुद की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है. क्यों? उसे लगता है कि लार्जर गुड ये है, एब्सोल्यूट गुड ये है. तो आपने सुना होगा हिस्ट्री में भी डार्क एजेस एक समय था और उसके बाद रेनेसां आया.
तो रेनेसां को लाने के लिए भी तो किसी ने ऐसा काम किया ही होगा ना, डिफाई किया होगा, और वो मॉरली करेक्ट भी रहा होगा। तो यहाँ पर ऑलवेज नहीं कह रहा है, मगर समटाइम्स कह रहा है। और जब पूरा पैसेज इस बात को एम्फसाइज कर रहा है कि अपने डिस्क्रिप्शन को यूज करना चाहिए, तो बहुत मुमकिन है कि ये लास्ट लाइन भी एक इंडिकेटर है कि ऐसा करना भी कभी कभी मॉरली एक्ट करने के लिए जरूरी होता है। कैसा करना? डिफाइंग कन्वेंशन। समझ गए आप? आपने क्वेश्चंस का जवाब तो ऑलरेडी दे दिया होगा। अब हम मेरे साथ आप जब पढ़े हैं तो फोकस करते हैं। इसमें बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है? थॉट, द थॉट ऑफ द राइटर। पहला देखें, अ मॉरल एक्ट कॉल्स फॉर यूजिंग आवर डिस्क्रेशन। अब मैंने डिस्क्रेशन आपको पैसेज में जानकारी दे दी थी, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रेशन, अपनी इंटेलिजेंस, अपने डिस्क्रेशन का यूज करना, अपनी बुद्धि का यूज करना है। सो टैली करता है, हो गया चेक। वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। नेक्स्ट, शुड रिएक्ट टू अ सिचुएशन इमीडिएटली। अब यहाँ पे आपका कॉमन सेंस भी यूज में आ रहा है। रिएक्ट, हम यूजुअली कहते हैं सिचुएशंस जब आती हैं, क्राइसिस जब आता है, तो रिएक्ट करने की जगह क्या करना चाहिए? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ रिएक्ट? कमेंट में लिखो अगर आपने ये पार्ट सुना है, so that I know that you paid attention to what I was saying. What is the opposite of reaction in times of crisis? Response. You know, we should respond to a situation immediately. Sometimes it takes time. हाँ, कि पहले आप लोगों से कंसल्ट करेंगे, फिर बजाय कि इमीडिएट रिएक्शन देने के लिए ये बुरा है ये अच्छा है, आप सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे। नेक्स्ट, सो नॉट दैट ग्रेट ऑप्शन, इज इट और इज इट नॉट? मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, इट्स अ वेरी जनरल ऑप्शन। मस्ट से क्वालिफाई तो कर रहा है। ड्यूटी, किस तरह की ड्यूटी? हाउ डज दिस पैसेज टॉक अबाउट द मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी और मैन शुड नॉट, or does it talk about how should he or she look at that duty? अब पहले तो मैन ही चलता था हर जगह, अब आजकल पर्सन आने लग गया है, जेंडर न्यूट्रल किया जा रहा है लैंग्वेज को। तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया हाउ। सो इट्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द मेन थॉट ऑफ द पैसेज, ऐसा सोच सकते हैं आप। सवाल तो आपने ऑलरेडी कर ही लिए होंगे, मेरे साथ तो आप डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? मैन शुड बी एबल टू डिफाई कन्वेंशन इन ऑर्डर टू बी मॉरल। ऑलवेज, नेवर, ये यहाँ पे जिक्र नहीं है, मगर यहाँ पे अगर ऑलवेज नेवर का जिक्र नहीं है तो यहाँ पे एक और क्लेवर यूज है वर्ड्स का। शुड बी एबल टू, ऐसा नहीं कह रहा शुड डिफाई कन्वेंशन। अगर खाली यहाँ होता शुड डिफाई कन्वेंशन तो लगता ऑलवेज डिफाई। Are you getting this point? Do you want to ask any more question here? अब यहाँ पे आ गया should be, ability होनी चाहिए उसमें, उसमें capability होनी चाहिए, उसमें intelligence होनी चाहिए कि जहां जरूरत है वहां डिफाई किया जाए। तो ये ऑप्शन न्यूट्रल हो जाता है, अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो आपने क्या चुना इनमें ऑप्शंस में से? This is your answer, people. 1 and 4. If you have doubts, please feel free to ask your doubts in the comment section or write to me. Where should you write to me? On this YouTube channel's name, imagining an email address with it, or should you write to me at where in the description box you find my email address? You better write here in the comment section to show participation and to be able to give a signal to other people around you that you're finding it useful and they might also be able to benefit from it. अब competition दो तरह के होते हैं, एक है positive competition, constructive competition, और एक है नेगेटिव कंपटीशन। पॉजिटिव कंपटीशन वो होता है जिसमें आप एक दूसरे के स्ट्रेंथ को री इन्फोर्स कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं अच्छा करने के लिए एग्जाम में। माइंड सेट ऑफ अबंडेंस जब आपके पास होता है कि सभी को उतनी दौलत और शोहरत मिल सकती है उनके प्रतिभा के अनुसार, अगर वो सही दिशा में काम करें, और अगर आप अपने दोस्तों को भी सशक्त बनाएं, तो आपके पास एक टीम तैयार हो जाती है जो आपको उस गोल को पहुंचाने में मदद करती है। ऐसे कहते हैं ना, इफ यू रन अलोन यू मे रीच a certain point faster, but if you go together you may reach farther. ये एक African proverb है. So you might be able to support others if you would want. More brainstorming will happen. मैं देखती हूँ कमेंट में कुछ participants बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं जो brainstorming को और ओपन करता है, स्कोप को और बढ़ाता है, और मुझे एक मैसेज देता है कि मुझे बहुत और रिस्पॉन्सिबली इन पैसेजेस को डिस्कस करना चाहिए और तैयारी के साथ करना चाहिए. I feel good about that. So
Please write in comment section what is the opposite of the word react that I told you so far, and why we did not reject option number 4. What is the answer? Now the next question, which of the following statements is the nearest definition of moral action? Nearest बोला है, right? According to the passage, it is mechanical. ये passage में nearest है या opposite है, farthest है? It's opposite of moral action, है ना? According to this passage, it's an action based on a sense of discretion. ये बातें हमने कर ली हैं. It is a clever action. Clever और moral में अंतर है. It is a religious action. अब जो बहुत धार्मिक होंगे वो शायद से सोचेंगे हाँ धर्म में भी मॉरलिटी की बात होती है. तो ऐसे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो अभी उनका एप्टीट्यूड वहां तक नहीं पहुंचा है जहां उन्हें समझ आए कि हम रिलीजन को एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं और मोरालिटी की कभी बात रिलीजन से अलग जाके हो सकती है. जरूरी नहीं है कि हमारे देश की जो सरकार हो वो हमारे रिलीजन को प्रमोट करे. तो ये जो बेसिक एप्टीट्यूड है, न्यूट्रलिटी है, एक न्यूट्रल माइंडसेट है, ब्यूरोक्रेसी के लिए जरूरी होता है. इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट रखा होता है कि भाई जो लोग अभी और समझदारी की जरूरत है और एप्टीट्यूड बिल्डिंग की जरूरत है वो इस लेवल पर स्क्रीन आउट हो जाए. ऐसा नहीं कि वो गलत सोच रहे हैं, बस ये जरूरी है कि उनको ब्यूरोक्रेसी के लिए जो माइंडसेट की जरूरत है, जो अप्रोच की जरूरत है, उसकी तैयारी करने की थोड़ी और शायद से जरूरत है. हाँ, सो with due respect to everybody's opinion, we have to have a bureaucratic mindset, which is also constitutionally valid and which is practical. Now, the next question, the passage contains a statement, lets himself be swept along like a log of wood by a current. ये किसके बारे में लिखा गया है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जैसे का? Nearest is R. हाँ, दो ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं. A person does not use his own reason, go with the flow वाला. Make sense? He is susceptible to influence, pressure. ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातें में मानेगा, go with the flow. बारिश आ गई, धूप आ गई, इसने कह दिया, वो कह दिया, तो ऐसी तैयारी करनी चाहिए, वैसी तैयारी करनी चाहिए. ऐसा ही होगा ना ये व्यक्ति जो अपने आप को बहाएगा. He cannot withstand difficulties, challenges. अब भाई ये हम कितना कह सकते हैं? He is like a log of wood. ये थोड़ा मजाकिया सा लग रहा है. Of course like a log of wood है, but हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चुने जो नियरेस्ट टू द मीनिंग है, जो मेन मीनिंग है. हाँ, अब इसमें हमें 1 2 3 4 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें चुनना है 1 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 4. आपने क्या चुना बताएं? फर्स्ट 2 चुना आपने? अगर कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं. आई होप यू फाउंड दिस डिस्कशन यूजफुल, यू फाउंड दिस वीडियो useful and relevant. If you did, if you liked the video, show your appreciation and tell me in the comment box, in this video, what did I say is the opposite of the word react to a situation? What should we do? Instead of reacting, what should we do? Allow me to wear any which dress I would want to or will feel comfortable in, or I feel comfortable in. That's why I call this channel MERA Desi Swag, so that it remains Desi and you can also watch it at your own Desi pace. Okay, all right, good luck, take care, bye-bye.